Hello everyone, Jai Jagannath. Hello everyone. So आज हमें गोटे नुआ चैप्टर पढ़िबा. That chapter is chemical thermodynamics. So thermodynamics विषय हमें आज पढ़िबा. Thermo माने कौन, dynamics माने कौन. I think physics रे बहुत पिछि पिला बहुत पढ़ी थिबे thermodynamics विषय रे. What is thermo, what is dynamics, ठीक अछि. So I will start the topic, that is thermo कौन और dynamics कौन, ठीक अछि. Okay, so let's start the topic. आरंभ करिबा आजिरो टॉपिक. गुड इवनिंग, हाउ आर यू पारा कमांडो एंड अदर persons, how are you? Am I audible and visible? I think to all of you. If you find any issue, जदि कहार किछि डाउट रोची, किछि भी डाउट्स रोची, any doubts you can share me. तुम्हें पचारि पारो, इठी चार्ट रे लिखि पारो. जदि स्टिल कहीं ना बहुत पिला मोर हमर कांटेक्ट रे ही अछंती. बहुत पिला some students have been contacted through WhatsApp and some have been already contacted through Telegram channel. So तुम्हें मैंने जहाँ भी जहाँ डाउट रोची kindly notify me. Okay, so आम आज थर्मोडायनामिक्स गोटे न्यू चैप्टर पढ़िबा. थे रिमाइंड करदेली. ओके, वॉइस कट होची, नो वॉइस कट होची कि ओके कांटेक्टेड थ्रू टेलीग्राम चैनल. नो वॉइस कट होनी, ठीक है, वॉइस कट होनी. ए कौन डीजे 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 लिखुच शुभ्रांशु? डीजे कौन? हाँ, डीजे कौन? what do you mean by DJ? हाँ, so thermodynamics, what is thermo? Thermo means means heat and dynamics means motion. Write down thermodynamics is derived from two words. That is, you can write down the notes. तुम्हें क्लास रे लिखि पारो, ठीक अछि. सेति पई मु YouTube रे बहुत जण पिलांगर डिमांड थिले जे सर क्लास रे लिखेबे. So I am writing as well as you have to write. Thermo means heat and dynamics means motion. Dynamics means motion. Okay, dynamics means motion. Okay, means dynamics means motion. ठीक अछि. सेति पई मु YouTube रे बहुत जण पिलांगर डिमांड थिले जे सर क्लास रे लिखेबे. So dynamics means motion. Okay, thank you Abhishek, thank you. Thermodynamics, so thermo means heat, dynamics means motion. It is the branch of chemistry or it is the branch of physics also. एटा physics रे और chemistry generally mechanics रे एटा गोटे part. जो माने बीटेक ने की भी पढ़िबो से माने भी हेल्पफुल रहइबो, ठीक अछि. So thermodynamics is the branch of chemistry. जेहेतु हमें chemistry कथा पढ़छे, so chemistry कथा लिखिबा. It is a branch of chemistry which deals with the study of
motion of heat energy, motion of heat energy accompanying all physical and chemical processes. Good evening, Sibani. Good evening, sir. Okay, so thermodynamics. Thank you, Vivek. Thank you. तापर thermodynamics रे हम देखिबा what are the importance of thermodynamics. No need to discuss. Let's discuss thermodynamics code actually use हुए. Thermodynamics generally हमें जेकोनस जगह हमें जदि voice caught होची, do you think that my voice is getting caught? Yes, Abhishek, you can read, but I will say that this will be not useful for you in class 12. Sir, को publication book रू पढ़ुचंती. Basically 3 books are preferred, that is NCERT, then Modern ABC, KP, and your yes, these 3 books are preferred for this class. So हम देखिबा some basic concepts. Out time use lost न करिक देखिबा some basic concepts. जदि किछि voice cut होची संग संग कहूथिबो, I think voice किछि basic concepts and terms related to thermodynamics. Related to thermodynamics. Thermodynamics को relate करिकी कौन कौन term रही, कौन कौन concepts रही, we will read here. Okay. So हम first term देखिबा. First term is your system and surrounding. First term आछि system and surrounding. My voice is not audible to all of you. Hello. मो वॉइस क्लियर होनी मझिरे मझिरे मो पढ़ोनी आई एम यू कैन कंटिन्यू ओके सिस्टम एंड सराउंडिंग ठीक अच्छे
सिस्टम एंड सराउंडिंग जदि हम देखा सिस्टम कौन आ सराउंडिंग कौन सिस्टम माने आम धर आम बर्तमान पढ़ुचे जो सिस्टम रे आम कौटी पढ़ुचे आम पढ़ुचे मोबाइल रे राइट मोबाइल प्लेटफॉर्म रे मुझे पढ़ाऊँगी सो मोबाइल हूँ तुम सिस्टम बा आम जदि सपोज आम कौन करुचे गोटे जगार आम घरे बसिकी आम गोटे जगार किसी गोटे को करिकुलर एक्टिविटी करुचे जो रूम रे बसिकी को करिकुलर एक्टिविटी करुचे दैट इज द सिस्टम सिस्टम परे बड़का जहाँ सब रहा दैट इज सराउंडिंग क्लियर बुझीगला माने सिस्टम होची कौन आम जो जगार रहीकि एक्टिविटी करुचे माने आम जो बसिकी आम तुम कंसीडर करुचे एनीथिंग एक्सपेरिमेंट करुचे बा एनी जिनस आम देखुचे दैट इज नोन एज सिस्टम ठीक अच्छे सो वी कैन राइट हियर दैट एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स any portion of the universe any portion of the universe chosen for thermodynamics consideration chosen for thermodynamic consideration माने आमे जोठी कौन करिवा कंसीडर करिवा बा जोठी हमें एक्सपेरिमेंट करिवा दैट इज नोन एज सिस्टम इज नोन एज सिस्टम यूनिवर्स रो जेकोसी जगार जोठी हमें कौन करुचे जोठी हमें थर्मोडायनामिकली कौन करुचे कंसीडर करुचे जोठी हमें एक्सपेरिमेंट करुचे सेटा को हमें कौन कहबा सिस्टम ठीक अच्छे बाकी बड़का रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को हमें कौन कहबा सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आउ बाकी बड़का जहाँ भी रही आम आगे इज नोन एज सराउंडिंग यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग आम सब बेले पाठ पढ़ला बेले जेकोसी एक्टिविटी कला बेले आम सब सिस्टम ओरिएंटेड हवा दरकार सराउंडिंग ओरिएंटेड हवा कथा नुह ओके रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग आम बाकी बड़का जहाँ रोचे सेटा हूँ सराउंडिंग सिस्टम छाड़ीदेले बड़का जहाँ रोचे से सराउंडिंग करवा जो मानकर पढ़िबार मेंटालिटी नहीं से मानकु कहि प्लीज गेट रिमूव फ्रॉम द क्लास तुमको क्लास जदि भल लगुनी यू कैन गेट रिमूव्ड आई हैव नो ऑब्जेक्शन बट प्लीज डू नॉट डेविएट अदर्स अन्य मानक आम डेविएट करवा अन्य मानक डेविएट करवा आमर कौन से अधिकार नहीं जद्वारा कौन हम कोठी ना कोठी आमर पढ़ारे आम उपरे असुविधा हम ठीक अच्छे आम केबे भी हेले क्या भाया डेविएट करवानी आम जदि पढ़ानी पढ़ार इच्छा ना यू कैन गेट रिमूव फ्रॉम द क्लास किंतु क्लास भितर एक्स्ट्रा यार साइड मेसेज करवानी प्लीज बुझीला सिस्टम कौन और सराउंडिंग कौन सिस्टम और सराउंडिंग ना कहार डाउट अच्छे सिस्टम कौन सराउंडिंग कौन ओके नेक्स्ट सिस्टम सराउंडिंग पर आछि टाइप्स ऑफ सिस्टम सिस्टम हमरो केते प्रकार रही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सिस्टम हमरो केते प्रकार रही और कौन कौन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ओके सिस्टम इज जनरली ऑफ थ्री टाइप्स सिस्टम इज जनरली थ्री टाइप्स सिस्टम इज जनरली ऑफ थ्री टाइप्स जनरली आमर सिस्टम जिते रही सब सिस्टम केते प्रकार तीन प्रकार थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम आ गोटे हूँ क्लोज सिस्टम आ गोटे हूँ आइसोलेटेड सिस्टम ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एक्सप्लेन करुच्ची जगन्नाथ आ गोटे हूँ आइसोलेटेड सिस्टम ओके तो ये तीन टा सिस्टम कौन कौन जिनस मुझे एक्सप्लेन करुच्ची अच्छा तुम्हें जितेबले गोटे जिनस घरे रोसई हो सपोज तुम घरे रोसई होला भात रोसई है चाउल पड़ा भात रोसई होगापी घरे जो कंटेनर थी जो कंटेनर रे चाउल पड़ुची
सेई कंटेनरटा ओपन थिबो ना नहीं आउ गरम थिबो पानी फुटुथिबो सेथिरे आमे चावल पडुची ना ना नहीं सो এই जो जिनस माने जोटी ढांकुनी रहिनी दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम जो सिस्टम रे तुम्हारा कौन नहीं ढांकुनी नहीं द सिस्टम इन व्हिच यू विल नॉट फाइंड एनी ढांकुनी ढांकुनी रहिबनी जोटा दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम बा कौन सी कवर नथिबो सेटा को हमें ओपन सिस्टम कहबा सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम अच्छा क्लोज सिस्टम कौन सेम जिनस तुम घरे भात है पूर्वर कौन कर दिया गला ना ता ऊपर गोटे ढांकुनी पड़गला बा प्लेट पड़गला सो आउटर कवरिंग रहीगला सो दैट ये किसी ये हो पार एक्सचेंज हो पार सो इट इज नोन एज योर क्लोज सिस्टम यहाँ कह तुम क्लोज सिस्टम बुझीला क्लोज सिस्टम आ ओपन सिस्टम ना कहार किसी डाउट अच्छे रिगार्डिंग टू क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम डू यू हैव एनी डाउट तामाने लिखिवा तापर फर्दर क्लोज सिस्टम तापर आछी पुणी हमर यस विदाउट कवरिंग तापर आछी कौन डाउट रही शुभ्रांशु ना आम थर्मोफ्लाक्स रे किसी गोटे जिनस रखिले थर्मोफ्लाक्स रे सपोज चाहा किंबा किसी जिनस रखिले सेटा तो कवरिंग हैला प्लस एमिति सील हैला जे जेमती हीट भी बाहर को जाई परिबो नाही ठीक है सो दिस इज ए isolated system you can say that this is an isolated system okay I am repeating again okay ठीक अच्छे repeat करिबा तार wording बा definition लिखि देले you can get cleared about this so this is an example of isolated system this is an example of isolated system ठीक अच्छे what is open system ताले open system माने the system which can exchange both matter and heat exchange both heat and matter you can note down throughout the class जो मैंने भी चाहो ए क्लास रे फेयर नोट करि पारो तुम नोट रे लिखि पारो सो दैट इट कैन बी मेंटेन ए चैप्टर टा पूरा डिटेल्स रे भला नोट लिखि पढ़ाबो द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ हीट एंड मैटर इज नोन एज ओपन सिस्टम ता कोन कह जिवो ओपन सिस्टम कह जिवो ओके क्लोज सिस्टम कौन ना जोटी हीट एक्सचेंज हो पार मैटर एक्सचेंज हेनी बट हीट एक्सचेंज हम ठीक अच्छे सो आम लिखिपर द सिस्टम इन व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली हीट बट नॉट मैटर को एक्सचेंज कर पाइबो नहीं इज नोन एज क्लोज सिस्टम ठीक अच्छे विश्वजीत एंड बैनाथ नाहक सिंपली यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस कहीं ना वॉइस मु आ गोटे जगह शुणुची ना मु जहाँ पढ़ाऊँगी शुणुची सो किसी भी वॉइस कट होनी सिंपली यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस किसी भी आम डिस्टर्बेंस करवानी जदि आमको वॉइस क्लियर होनी ताहले कोठी ना कोठी आमर निश्चय ये प्रॉब्लम रोचे तापरे आइसोलेटेड सिस्टम कौन द सिस्टम which can neither exchange heat nor matter is known as isolated system
ठीक अच्छे ना हीट एक्सचेंज करिवो ना तुम्हारा मैटर एक्सचेंज करिवो ओके ताले ओपन सिस्टम यस दुर्गा प्रसाद चिन्ह पारुछि यू आर इन क्लास 12 सो ओपन सिस्टम रो हमें एग्जांपल कोन नै परिबा ओपन सिस्टम रो एग्जांपल हमें लिखि परिबा जे तुम्हारा ए लिक्विड इन इट लिक्विड इन कांटेक्ट विथ इट्स वेपर इन एन ओपन वेसल बा heating of liquid in a open vessel heating of liquid in an open vessel ओपन वेसल रे तुमरो प्रॉब्लम बुझो जे कौन सी जिंस जदि आमे किछि रहउछि सिंपली हीट करूचे गोटे जिंस आमे हीट करूचे किंतु तार ढांकुणी बा तार कवरिंग आउटर कवरिंग आमे खोला छाड़ी देचे सेटा को आमे कहबा ओपन सिस्टम ठीक अछि प्रवीण नेक्स्ट क्लोज सिस्टम माने तुमारो आउथरे कहउछि क्लोज सिस्टम माने हीटिंग ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज्ड वेसल गोटे क्लोज्ड वेसल रे आमे हीट करिबा लिक्विड को दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम क्लोज्ड वेसल माने तार आउटर ऊपर कवरिंग रहिथिबो ठीक अछि आइसोलेटेड सिस्टम माने प्लेसिंग हॉट लिक्विड्स जो गरम थिबो गरम पानी हो गरम तर एनी गरम थिबो जो गुडा को हॉट लिक्विड्स इन थर्मोफ्लास्क रे जदि हमें गरम पानी रखिबा सेटा को आजिबो तुमर कोन आइसोलेटेड सिस्टम तुमे गरम परिबो पानी को ओपन रखिथिबो किस समय परे पानी रो वॉल्यूम धीरे धीरे कमी जिवो तार अर्थ एडी धीरे धीरे हीट भी एक्सचेंज होची मैटर भी किंतु एडी तुमे पानी गरम करिकि रखिथिबो पानी रो वॉल्यूम कमी होनी किंतु किस समय परे हीट बंद करिया परे से ठंडा हे गेले पुनी पानीडा पुनी ओथरे ठंडा हे जिवो किंतु थर्मोफ्लास्क रे जेते बेला में रखितबा गरम पानीडा हमर 5 घंटा जाय भी से पानीडा गरम थिबो चाहाडा भी ओके Subhranshu, Susri and Praveen, did you understand the systems, different types of systems? Okay, it is quite important. Next, फर्दर या को आवरी दी प्रकार क्लासिफाई कर परिबो फर्दर द सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स आमे पुनी अथरे ताकू सिस्टम को पुनी अथरे दी प्रकार क्लासिफाई कर परिबा What are they? One is your homogeneous system. Let it be A. कहीं ना हमारा यहाँ करे bit 1, bit 3, bit 2, bit 3 नीचे. It be homogeneous system. And B is heterogeneous system. B is heterogeneous system. साहिल पचारले क्वेश्चन जे सर क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम रो डायग्राम सेम कि ना क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम रे डायग्राम प्राय सेम किंतु आइसोलेटेड रे कथा रहउची कोन गोटे वॉल रहइबो वेल डिफाइंड वॉल रहइबो किंतु क्लोज सिस्टम रे नॉर्मल वॉल रहइबो कंटेनर रो वॉल नॉर्मल रहइबो किंतु आइसोलेटेड रे तुम देखि परियो जे गोटे वेल डिफाइंड वॉल रहिछि मोटा वॉल रहिछि सो आइसोलेटेड टा जोडा कि जद्वारा तुम्हारा हीट एक्सचेंज हे परिबनी किंबा तार मैटर भी एक्सचेंज हे परिबनी ता भितर जहाँ भी तुम्हारा कंटेंट थिबो वाटर बा जहाँ भी थिबो से जिंदी बाहर को जाई परिबो नाही
ओके होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम कौन ना द सिस्टम which contains only one phase compounds कौन वन फेज कंपाउंड और डिफरेंट फेज कंपाउंड कौन एग्जांपल देले आउ टिके बुझियो एडी कौन द सिस्टम व्हिच contains different phase compounds तो होमोजेनियस रे कौन हम ना जोटी सेम फेज रहिबो वन फेज रहिबो फॉर एग्जांपल जदि हम कहबा कौन थिबो ना जोटी तुमरो पेट्रोल और केरोसिन मिसी की थिबो गोटे जगह रे बा तुमरो सॉल्ट और सुगर मिसी की थिबो गोटे फेज माने सॉलिड जदि थिबो सबुडा सॉलिड लिक्विड जदि थिबो सबुडा लिक्विड गैस जदि थिबो सबुडा गैस इवन लिक्विड दीटा मिसिबल लिक्विड थी माने दी जाक मिसी जाउथिबो फॉर एग्जांपल तुम्हारा वाटर को आमे ऑयल मिसे कि नेला बेले सेटा हेटेरोजेनियस सिस्टम हे जिवो वाटर ऑयल डिफरेंट फेज हे गला ठीक अछि वाटर और ऑयल डिफरेंट फेज हे गला किंतु वाटर बा ऑयल पेट्रोल दीज आर सेम फेज सो एग्जांपल जदि हम देखिबा एआर किछि रहउछि बोले से भी गोटे होमोजेनियस तापरे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथानॉल और वाटर को मिसी जीवो अच्छा एपटे एग्जांपल कौन रहइबो एपटे एग्जांपल रहइबो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर जते सब हेटेरोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर भी हे पारे एग्जांपल रे ठीक अछि तापरे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर ऑयल वाटर भी बा तुम्हारो मिल्क एंड वाटर ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम क्लियर एई जाय कहार किछि डाउट अछि हमें बर्तन स्टिल वी हैव रेड सिस्टम सराउंडिंग ओपन क्लोज आइसोलेटेड देन होमोजेनियस एंड heterogeneous systems okay third point देखिबा हमरो third parameter is macroscopic system and macroscopic properties and microscopic properties macroscopic properties and microscopic properties macro कोन माइक्रो कोन macro माने लार्जर माइक्रो माने स्मॉलर macro माने हमें केमदी देखिबा मास गोटे माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम गोटे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर आउ जदि हम देखिबा डेंसिटी गोटे माइक्रोस्कोपिक किंतु मु मनकर कहबी माइक्रोस्कोपिक कोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स आयोनिक फोर्स रो स्ट्रेंथ प्रेशर नो these are all are related to your microscopic properties जोटा का एटम आ आयन केस रे जो प्रॉपर्टी गुडा कर होतबे से गुडा का माइक्रोस्कोपिक जो गुडा का लार्जर मॉलिक्यूल केस रे होतबे से गुडा का मैक्रोस्कोपिक
properties ठीक अछि the properties associated with यार definition जदि हम लिखिबा the properties associated with collective behavior of particles like density, temperature, pressure, mass, volume, etc. are known as macroscopic properties. Microscopic कौन जो property गुड़ाक microscopic the properties associated with smaller ions, atoms like ionic radius, ionization energy, etc. Our electron affinity, electronegativity, etc. are known as microscopic properties. तुम मैंने समझते पढ़िछ microscopic property माने ionization energy, atomic radius, ionic radius. अच्छा मोर गोटे डाउट थिला जे cationic, anionic और atomic को रेडियस टा सब लार्जर cationic radius ना anionic radius ना atomic radius which radius is larger? Can anyone say cationic, anionic or atomic radius which one is larger? Cationic, anionic or atomic which one is larger? Anyone who can say which one is larger? Cationic, anionic and atomic which radius is larger generally? नो आंसर कहार है आंसर आसुनी व्हाट इज द आंसर आंसर कौन हम अच्छा ये आंसर सेंड माने बाली एसएनडी सेंड माने बाली हैला सेंड माने बाली शुभ्रांशु गुरु दत्त कहले सर लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ थरे सर प्लीज सर एटॉमिक रेडियस कैटायनिक एटॉमिक एनायनिक बॉयनाथ कहले एनायनिक अच्छा एनायनिक बॉयनाथ कहले आ अन्य माने एटॉमिक वेरी रॉन्ग आंसर पिला माने सबडो आंसर राइट आंसर इज एनायनिक रेडियस मु क्लास रे पढै छी बहुत थरा आ राइट आंसर हैज बीन गिवन बाय बॉयनाथ okay बॉयनाथ हैज गिवन द राइट आंसर हु इज द बॉयनाथ बहुत बढ़िया आंसर देचंती आयनिक अनायनिक रेडियस और बॉयनाथ ठीक आंसर देचंती जे एनायनिक रेडियस सब हाईएस्ट
तापर एटॉमिक रेडियस आ सब लिस्ट होची तुमरो कैटायनिक रेडियस ठीक अछि। नेक्स्ट ये गला हमर थर्ड पॉइंट बा थर्ड पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर हम जीवा दैट इज योर स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। फोर्थ नंबर इज स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ठीक अच्छे। हम देखा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन एबे मनकर कहगला जे तुमको कौन ना तुम्हें गोटे काम कर समस्त को कहला ध्यान देकी सुन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कौन तुम कहला जे गोटे काम कर तुम्हें एठू जीव बरहमपुर जीव एठू कोठू जीव तुमर तुमर घर ठू हाउस रु सपोज लेट मी से भुवनेश्वर रु पूरी जीव तुम्हें भुवनेश्वर रु कुआडे जीव पूरी को जीव भुवनेश्वर पूरी जीव भुवनेश्वर पूरी जीवा पई बहुत गुडे रास्ता रही बट भुवनेश्वर पूरी जीवा पई 3-4टा रास्ता रही ठीक अच्छे। ट्रेन लाइन भी रही एयरलाइन भी रही तो तुमर मेन काम है भुवनेश्वर रु पूरी जीवा को ठीक अच्छे। हेले एठी मु कहबी किए को बाटे गले अधिक खर्च पड़िबो ना सेम खर्च पड़िबो। धर 3टा जने गला रेलवे ट्रैक रे जने गला आउ जने गला रोड लाइन रे आउ जने गला एयरलाइन रे ओके। सो रेलवे रोड आउ एयरलाइन रे गला मते बर्तन कहबो जे कोठी गले कौन खर्च कोठी खर्च सब अधिका पड़िबो कोठी खर्च सब अधिका पड़िबो रोड रे गले ना रेलवे रे गले ना एयरलाइन रे गले। एयरलाइन माने तुम्हारा कौन एरोप्लेन बा हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर रे सपोज तुम गल तुम कहला हेलिकॉप्टर रे जीव सब अधिका वेरी गुड बैनाथ एयरलाइन राजा एयरलाइन नो एयरलाइन रोडवे अच्छा सरस्वती रोडवे एयरलाइन अच्छा एयरलाइन ओके एयरलाइन रे ही अधिक पैसा खर्च हम सो यहाँ मोर प्राइस खर्च हम ताले ए जिनसटा को मुझे कहबी ये जर्नी विथ मनी जर्नी विथ ए मनी जर्नी विथ मनी ताले कौन हम यहाँ हम गोटे तुम पाथ फंक्शन कारण पाथ ऊपर डिपेंड कर तुम्हें को रास्ता देकी गल से रास्ता देकी गले से अनुसार टाइम भी खर्च हम से अनुसार पैसा भी खर्च हम टाइम आ मनी विल बी डिपेंडेंट ऑन द पाथ तुम्हें को पाथ रे गल ठीक अच्छे। एबे गला जर्नी कथा गला मु मन कहबी जे तुमको कौन करिवार अछि ना तुमको तुम घर ठू दिस इज योर हाउस घर ठू नियर बस स्टैंड तुम जोड़ा बस स्टैंड अच्छे बस स्टॉप तुम घर ठू बस स्टॉप जीव ठीक अच्छे। एडी तो एयरलाइन देकी जाई परियोनी नियरेस्ट बस स्टॉप माने तुम एयरलाइन दे जाई परियोनी हाँ वेहिकल देकी जाई परियो पाथ किंतु गोटे रूट रहिबो ना 3-4टा रूट रहिबो घर टू बस स्टॉप नियरेस्ट बस स्टॉप 3-4टा रूट रहिबो कि ना गोटे रूट रहिबो घर टू बस स्टॉप टा कार घर टू बस स्टॉप बहुत गुटे रूट अच्छी शॉर्टकट रूट मुझको पचार कथा शॉर्टकट रूट गोटे ही रहिबो ना वन रूट वेरी गुड सुश्री आई थिंक मैक्सिमम पिलांकर वन रूट ही रहिबो गोटे ही रूट रहिबो केमिस्ट्री 3 रूट 2 रूट ठीक है यहाँ वन रूट रहा
ताले मु मनकर ए जो कहबी जे तुमको केतेटा ये दरकार पड़छ माने गोटे रूट हैला ताले मु मनरे कहबी टाइम डा तमरो डिपेंड करछि बस स्टॉप ऊपर बस स्टॉप टा जदी पाख रहइबो कोन रहइबो जल्दी पहुंचबो बस स्टॉप टा जदी दूर रहइबो डेरे पहुंचबो सो एडा पाथ ऊपर डिपेंड कलानी एडा तुमरो पोजीशन ऊपर डिपेंड कला बस स्टॉप ऊपर डिपेंड कला बस स्टॉप ठीक अछि बस स्टॉप बा मु मनरे बे कहबी तमे घर ठू बस स्टॉप रे जाकी पहुंचलो घर पहुंचला घर बाहरलाडू तमरो गोटे स्पीड थिला आउ बस स्टॉप रे पहुंचला गोटे मु पचारि तमे केते स्पीड रे जाकी पहुंचलो घर बस स्टॉप गलो केते स्पीड रे जाकी पहुंचलो घर बस स्टॉप गलो केते स्पीड रे जाकी पहुंचलो तमे केनती बाहर करबो कैलकुलेट घर बस स्टॉप रो डिस्टेंस केते बाहर कर दबो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एमदी ही करा जाय ना ना तमे देखिबो मु घर गला बेले कोठे रहिथिली सेठु सेति केते टाइम नेली पुनी रहिला पर पुनी सेठु सेति कोठे रही टिके टिफिन कली सेठु सेति केते टाइम कोडी सांग सहित कथा हली सेठु सेति केते टाइम सबुडा बाय टाइम करिवो सेमती करिवो कि 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर सुब्रंत शेखर कहले अच्छा सेमती करियो कि ना तुमरा डायरेक्ट बस स्टॉप रु घर दूरता सपोज तुमरा बस स्टॉप रु घर दूरता होची 100 मीटर तुमको टाइम केते लागिला सपोज 5 मिनिट सो 100 by 5 माने 20 मीटर पर मिनिट 10 मीटर पर सेकेंड अरे वाह हो बढ़िया सो 20 मीटर पर मिनिट एमती ही हम सो एठी हम जो देखिबा एडे पाथ ऊपर डिपेंड करू नाही इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द फाइनल पार्ट्स फाइनल पॉइंट ऊपर ही डिपेंड करछि एडा को आजिबो स्टेट फंक्शन ताले स्पीड को कोन को आजिबो स्टेट फंक्शन स्पीड को आजिबो स्टेट फंक्शन किंतु ए जो मूवमेंट को आजिबो बा तुमरो प्राइस को आजिबो तुमरो पाथ फंक्शन को पाथ रे गलो सेही अनुसार खर्च हबो ओके बुझेला स्टेट फंक्शन कोन पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन ना तुमरो फाइनल आ इनिशियल डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करछि किंतु पाथ फंक्शन ना तुम पाथ ऊपर डिपेंड करछि तुम जेते पाथ जीवो से अनुसार अधिक खर्च हो बा अधिक टाइम देबो क्लियर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन स्टेट कोन पाथ कोन स्टेट माने तुम्हारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन ऊपर डिपेंड करिवो डिवाइडेड बाय टाइम बाय डिवाइडेड बाय समथिंग किंतु पाथ माने तुम्हारा कहा ऊपर डिपेंड करिवो पाथ ऊपर फॉलो करिवो सो हम लिखि परिबा स्टेट फंक्शन द thermodynamic properties the thermodynamic properties which depend upon का ऊपर डिपेंड करिवो which depend upon the path followed पाथ ऊपर ही डिपेंड करिवो इज नोन एज पाथ फंक्शन जोटा तुम्हारा पाथ ऊपर डिपेंड करिवो ताको आजिवो पाथ फंक्शन पाथ ऊपर डिपेंड करिवो ठीक अछि पाथ ऊपर डिपेंड करिवो कोडा वर्क हीट ओके वर्क हीट ए सब पाथ ऊपर डिपेंड करिवो एग्जांपल रे जदी हम लिखिबा एग्जांपल रे आसी हमरो वर्क तमे केति समय काम कलो माने कोपड़ देकी जाइछो सेपट देकी जो पट देकी जीव सेपट अधिक कोपड़ अधिक काम कोपड़ कम काम आउ हीट तमे कोपड़ चूल्हा रे तमे माने को भला चूल्हा यूज करछो आ को भला बर्तन यूज करछो हीट पई दैट इज योर हीट एटसेट्रा वर्क हीट फोर्स भी दिस इज द पाथ फंक्शन अच्छा आउ हमर ये फंक्शन कोन तुमरो कहर स्टेट फंक्शन कोन हम कहबा ना से पाथ ऊपर डिपेंड करनथियो दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द फाइनल आउ इनिशियल ऊपर ही डिपेंड करिवो तुमरो पाथ ऊपर डिपेंड करिवो नाही सो हम लिख परिबा दैट थर्मोडायनामिक पैरामीटर the property the thermodynamic parameter which depends upon
प्रॉपर्टी हबो या ऊपर प्रॉपर्टी हबो प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स इजी लिखा हैथिला ना the thermodynamic parameter which depends upon the initial and final state of the system. Initial and final state of the system. Initial और final state ऊपर depend करुछि. is known as कौन कह जे ताको हमें स्टेट फंक्शन is known as स्टेट फंक्शन ताको हमें कहबा स्टेट फंक्शन जोटा कि तुमरो इनिशियल और फाइनल ऊपर डिपेंड करिवो ओके इनिशियल और फाइनल ऊपर कौन कौन डिपेंड करिवो स्टेट फंक्शन रे एग्जांपल रे कौन कौन जीवो इनिशियल और फाइनल ऊपर डिपेंड करछि ओटा होछि एंथैल्पी प्रेशर एंथैल्पी प्रेशर वॉल्यूम एटसेट्रा एगुड़ा पर आम डिटेल्स से पढ़ा एंथैल्पी तुम कह सर एंथैल्पी आम तो कौन जान आप कौन एंथैल्पी कह तुम्हें पढ़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी आउटे पढ़ी तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी आउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ठीक अच्छे दैट इज एनर्जी बदल में एंथैल्पी भी यूज कर जाए सो एंथैल्पी माने कौन आ कहीं एंथैल्पी तक कह जाए आम आगू पढ़ा डिटेल्स ये गला आमर स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन तापर आमर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल 5 नंबर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट कौन धर आमर किसी गोटे थर्मोडायनामिक पैरामीटर रही जड़े आउ जनक ऊपर डिपेंड करुच्ची जड़े आउ जनक सहित रिलेट करें कहवा डिपेंडेंट रिलेट करूनी माने इंडिपेंडेंट ओके सो आम लिखिपर यू कैन राइट हियर दैट द वेरिएबल which depends upon other to be expressed out is known as डिपेंडेंट वेरिएबल ताको हमें डिपेंडेंट वेरिएबल कहबा जोटा कि अन्य ऊपर डिपेंड करिवो फॉर एग्जांपल जदि हमें कहबा एग्जांपल कौन कौन रही एग्जांपल रे हमर रही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एटसेट्रा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एटसेट्रा एगुड़ा कौन होची ना एगुड़ा गोटे वेरिएबल आउ गोटे वेरिएबल पर डिपेंड करे जेमिति आमे कहबा जदि तुमरो मु गोटे जगह प्रेशर पकेली वॉल्यूम कौन हबो वॉल्यूम ऑब्वियसली तारा डिक्रीज हबो कहीं कम जगह थिला प्रेशर पड़ला वॉल्यूम डिक्रीज होला अच्छा मु जदि किछि गोटे जगह प्रेशर देली टेम्परेचर बढ़िबो सो एगुड़ा इंटर रिलेटेड जणे आउ जनक ऊपर डिपेंड करूछि दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एथिपय माने कोन कहजिवो डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन जे आउ का ऊपर डिपेंड कर नथिबो फॉर एग्जांपल एंथैल्पी एंथैल्पी का ऊपर डिपेंड करेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है so the variable which depends upon other which does not depend upon the other जे अन्य ऊपर डिपेंड करे ही नहीं लाइक मास के बेले का ऊपर डिपेंड करिवो कि तमरो माने प्रेशर बढ़िले मास बढ़िवो प्रेशर कमिले मास कमिवो ना
mass as usual same रहइबो. The variable which does not depend upon others is known as independent independent variable. समस्ते नोट लिखुछ तो सेति पे मु लिखेउची. अदरवाइज जब तुम्हें नोट न लिखिबार था मो पाखे ऑलरेडी लास्ट ईयर पीपीटी अच्छी, इवेन हैंड नोट पीपीटी अच्छी, इवेन नॉर्मल पीपीटी भी अच्छी जोटी तुम्हारा स्लाइड्स रही. बट इट इज क्वाइट एसेंशियल दैट यू शुड राइट. तुम्हें लेख बोलिकी से मु लिखुची. एग्जांपल होची मास. ठीक अच्छे. ये गला डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक अच्छे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर. नेक्स्ट इज योर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पॉइंट आछि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. एटा बहुत इंपोर्टेंट. इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रु प्राय नीट रे क्वेश्चन आसे. आउ हमर बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आसे. Which among is intensive property, which among the following is extensive property, ये सब क्वेश्चन आस्था है. ओके तो आम लिखा इंटेंसिव कौन एक्सटेंसिव कौन. जोड़ा तुम जोड़ा डिपेंड करे नाही ताकू कहुए इंटेंसिव. इंडिपेंडेंट जी इंडिपेंडेंट ताकू इंटेंसिव कहुए. जी डिपेंडेंट ताकू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहुए. कहाँ पर इंडिपेंडेंट ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर. द प्रॉपर्टी which is independent, the property which is independent upon amount of substance, amount of substance उपरे जो प्रॉपर्टी टा तुम्हारा इंडिपेंडेंट रहिबो is known as इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बुझीला मन रखिबो केमदी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव आईएन दीड जगह सेम रही. इंडिपेंडेंट रे आईएन रही, इंटेंसिव रे भी आईएन रही. कहजिबो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़िले तार किछि वैल्यू बढ़िबोनी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ो कि कमो तार किछि वैल्यू बढ़िबोनी किंबा कमिबोनी. सेटा कहजिबो तुमारो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट रोच. ठीक अछि. फॉर एग्जांपल मन कहबी प्रेशर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़िले तार प्रेशर बढ़िबोनी. बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़िबो कि. मेल्टिंग पॉइंट जदि हमें कहबा मो मनकर गोटे गोटे 5cc बोतल बा गोटे 500 ml बोतल रो पानी नेबी आ गोटे 2 लीटर बोतल रो पानी नेबी. दीड जगह बॉइलिंग पॉइंट सेम रहबा ना 100 डिग्री ना यार बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री तार 100 डिग्री बा यार 105 डिग्री तार 120 डिग्री एभला किछ हबो कि. बॉइलिंग पॉइंट सेम रहबो ना. तमे कम नियो कि बेसी नियो बॉइलिंग पॉइंट वेरी करबोनी. राइट. सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेम 0 डिग्री सेल्सियस. सरफेस टेंशन भी से भलिया. फर्दर नेक्स्ट अछि तुमारो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी. सरफेस टेंशन बदलिबनी, विस्कोसिटी बदलिबनी एटसेट्रा. अच्छा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन जोड़ा अन्य पर डिपेंड करिवो. ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी which is dependent which depends upon the amount of substance. amount of substance बढ़िले से प्रॉपर्टी डा बढ़िबो. amount of substance कमिले प्रॉपर्टी डा कमिबो. कौन कौन देख वॉल्यूम तुम अधिका नेले वॉल्यूम बढ़िबो, कम नेले वॉल्यूम कमिबो. अधिका नेले मास बढ़िबो, कम कम नेले मास कमिबो. इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जहाँ आम कौन कह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एग्जांपल कौन. एग्जांपल आछी हमर वॉल्यूम, मास, एनर्जी एटसेट्रा. तापर आछी नेक्स्ट आछी हमर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स.
थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन थर्मोडायनामिक प्रोसेस रही है आम ताको केमती बुझीपर एति आज आज ही पढ़ा अवश्य टिके डिले हो गलानी सो आज ये लास्ट पॉइंट रे रखी करदे माने तुम टोटाल आम पैरामीटर्स ऊपर डिटेल्स डिस्कस कले आशा करुँची नेक्स्ट क्लास को समस्ते टिके कौन पढ़ी आसबे और सीरियस रे क्लास रे आज बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट है भल लगे डिस्टर्बेंस करवानी पढ़वानी जदि ठीक अच्छे तुम जब न पढ़ी पार्छ इट इज अप टू यू बट वी शुड नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस आइसोथर्मल प्रोसेस फास्ट हम देखा आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस माने कौन ना जो प्रोसेस रे टेम्परेचर सेम रहिबो द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक अच्छे सो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर जोटा तुम कौन रहिबो कांस्टेंट टेम्परेचर रे जो प्रोसेस रहिबो दैट इज आइसोथर्मल ए पॉइंट गुडा को मन रखा पड़ो कारण आम जब भी आगु आगु पॉइंट गुडा डिस्कस करिया ये सब यूज कर तापरे आइसोथर्मल पर आसुची आइसोबारिक आइसोबारिक माने कौन आइसोबारिक प्रोसेस रे प्रेशर सेम रहा सब फिजिक्स रे भी अच्छी सेम टर्म किछिटा एटा फिजिक्स रे भी पाइबो हला आइसोबारिक प्रोसेस माने कौन ना प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर कौन रहिबो कांस्टेंट रहिबो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर हम तुम आइसोबारिक आइसोकोरिक कौन वॉल्यूम प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक पॉइंट गुड़ाक टिके मन रखा पड़ो अभ्यास न कले भूली जीव at constant volume is known as isochoric तापर आछि adiabatic adiabatic माने जोडे तुमरो कांस्टेंट हीट रहबो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट हीट कौन रहिबो ना कांस्टेंट रहिबो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट तुमरो हीट कांस्टेंट रहिबो ठीक अछि नेक्स्ट 5 पॉइंट इज साइक्लिक प्रोसेस नहीं एडा हे गेला एडियाबेटिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल चार्टा है हाँ साइक्लिक प्रोसेस राइट साइक्लिक प्रोसेस कैरिड आउट टू द इनिशियल स्टेट जो प्रोसेस रे पुणी आउथरे इनिशियल स्टेट को पळे आसीबो 10th रे थिला बढ़िया कथा प्रोसेस कैरिड आउट टू द इनिशियल स्टेट सो इनिशियल स्टेट को जो प्रोसेस टा आसीबो इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक पर आछी रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस व्हिच कैन साइक्लिक कौन इनिशियल आसिला ठीक अच्छे रिवर्सिबल कौन जोटी तुम बैक आस पार ठीक अच्छे माने द प्रोसेस
in which the process in which both the system and surrounding lie in equilibrium सबले इक्विलिब्रियम रे रहिबे माने आमे कहि परिबा जे हीट चेंज हेई परिबो नाही बा से पुनी पूर्व अवस्था को रिवर्सिबल प्रोसेस पुनी उथरे पूर्व अवस्था को रिटर्न कर जिवो अच्छा साइक्लिक और रिवर्सिबल भितर फरक कोन रिवर्सिबल माने प्रत्येक जगह रे रिवर्सिबल रहउची माने आमे मनर कहि फॉर एग्जांपल तुम्हारा आइस मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस केमदी तुमे एबे टिके देखुछ प्रत्येक समय इक्विलिब्रियम पाइबो केमिदी ना तुम्हारा आइस टा एठी तुम्हारा आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर आइस तुम्हारा के समय पर वाटर रे कन्वर्ट होची आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू solid ice is converted into water or liquid water किंतु संगे संगे तो होनी ना तो आमे देखुचे जे जेतिके आइस होची प्रत्येक फेज रे जेतिके आइस होची सेतिके आइस पुनी औथरे लिक्विड पुनी औथरे सॉलिडिफाइड होची माने जेतिके आइस मेल्ट होची सेतिकिरु किछिटा आइस पुनी औथरे सॉलिडिफाई होची सो एडा गोटे हमर कहि परिबा में रिवर्सिबल प्रोसेस एडा गोटे हमर रिवर्सिबल प्रोसेस किंतु किछि गोटे जिनस आमे जळै दबा सपोज कार्बन जळै देले कार्बन को हीट कर देले सी कार्बन को हीट कर देले CO2 बाहरला ए बर्निंग बा कंबशन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस एटा इरिवर्सिबल सी आ बैक आसीबनी काहे कि प्रत्येक मुहूर्त रे इक्विलिब्रियम रीच होनी एडी किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे इक्विलिब्रियम रीच होची ओके इरिवर्सिबल लास्ट पॉइंट irreversible process in which the system and surrounding do not lie at equilibrium बा इन इक्विलिब्रियम रे रहिबनी सेडा को हम कोन कहबा सेडा को हम कहबा इरिवर्सिबल प्रोसेस आज पई एतिकी ही थिबो तुमरो अप टू दिस बेसी पढ़ाइनी ठीक अछि आमे एतिकी जिंस आमे जहा पढिले ताको जेमति आमे मने रखिबा नेक्स्ट क्लास को आसिले पुनी आमे नुवा गोटे कांसेप्ट पढिबा कोन रहउची इंटरनल एनर्जी केमति कैलकुलेट करा जाय फर्दर इंटरनल एनर्जी कहा ऊपर डिपेंड करे आउ एंथैल्पी कौन एंथैल्पी केमती कैलकुलेशन करे जाए देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट लॉज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स तापर हीट कैपेसिटी एटसेट्रा ऑल द टर्म्स वी विल डिस्कस लेटर हमें बड़का टर्म सब नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ओके गुड नाइट फॉर योर प्रेजेंस थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू अगेन फॉर दिस क्लास ओके थैंक यू